Physician is a global forum where the physicians all over the world, they put forth their research, their clinical experience, case presentations, and there occurs events like Doctor's Dilemma, which is a quiz of the postgraduates and undergraduates, and lot of panel discussions, debates and plenaries all across the world. There are branches in 78 countries and more than 35,000 members and 3,000 fellows of American College of Physicians are there world over. India chapter was started 10 years back, and this is the 8th annual conference of Internal Medicine American College of Physicians India chapter, where 3 days, 22nd, 23rd and 24th of September, we have invited more than 300 faculties and 1,000 delegates to discuss over different aspects. We had more than 100 free papers which are presented, and the best paper in the publication group, in the case presentation group and also in the research group will have an award of travelling to our international conference free of cost. And we have yoga session, which is a ACP Soul Kari program, took place today morning. There are women's forum, there are early career physician programs, and there are plenaries, debates and research papers on hypertension guideline, on COVID and different bonding aspects of the present day society. The international president of American College of Physicians, the presidents of Japan, China, Sri Lanka, people from other countries and many more are joining online and offline in this conference, and we have delegates from 6 countries including South Asian countries, India and US as well as Japan. So this gives an international look to the event, and best of the research in the different fields are presented here. I am sure people attended have taken the message to their clinical practice, and at the end of the conference, definitely it will increase the understanding, clinical approach of our doctors, and the benefit goes directly to the people, to a sufferer, to a patient, which will cure them or give them some relief. And I wish more people will be the members of this organization. There will be more fellows, more research, and like in every field, we want to go global. In the field of medicine, we can go global and we can give the best of the discovery, best of the world for the treatment of our patients at the remote corner of the country. I must thank our Governor, ACP India Chapter, Professor Anuj Maheshwari, and the Chairman Scientific of the conference, Dr. A.K. Virmani, for good scientific program, good administrations, good networking, good socialization, and encouraging all the physicians and giving them a forum to grow. And wish in future day, Odisha can be a part of vital functioning of the American College of Physicians India chapter, and together we can take this forum to newer heights. Thank you all. I am very happy to connect with you through this network. I am Dr. Muruganathan, immediate past governor of American College of Physicians India chapter. American College of Physicians India chapter is doing excellent work in this country, in the academic field, in the service field, in the research field. Today I gave a talk on lessons learnt from COVID and the way forward. You know, everywhere in the literature, in the article, you can see about COVID, what COVID has produced problems in the country. But I specifically talked about the lessons for the public as well as special lessons for the family. One of the important lessons we learned in the COVID, you should have family and profession balancing.
and you should always take care of yourself. Self-care is not selfish. Doctors burnt out is too much. So we were insisting about well-being. One of the ACP's motto is, to promote well-being, wellness centers, well-being. And this lesson we learned during COVID. And Anuj was conducting a lot of webinars on well-being. So I specifically said, apart from the medical lessons, the public health lessons and the lessons for the family. As I said, many people learned new things like cooking, time for the family, and in certain family, some bad situation. The lesson what we learned also, this is a very important example. The husband-wife had COVID. Husband was admitted in the 4th floor. The wife was admitted in 3rd floor. Unfortunately, the wife died. Husband sitting in the 4th floor could not come for the cremation, and this body was cremated by the hospital staff, not by the family. So much of a pathetic situation happened during COVID. So I thought the lessons you learned in COVID is much, much important. Of course, you have to have global health work strengthening, resilience. There should not be disparity, and then everybody should be given proper health care, and vaccine development is there. One vaccine, the CDC as September 13th have released a vaccine called updated vaccine. Is an mRNA vaccine which should be taken by anybody age about 6 months to any age to prevent COVID. So this is a very important vaccine, and sooner or later it will come to India, and like that so many new things have come, and only thing is preparedness is the key for the COVID. And as I said, so many lessons personally we learned, and also the government has learned, and then research has learned. The knowledge is no bound for the vaccine because COVID, so many new things have come, and we have understood how COVID can alter the life, how hypertension or diabetes or comorbidities can change the COVID. The key important message is whatever you have, if you have the controlled hypertension, controlled diabetes, controlled obesity, COVID cannot increase the mortality. So always look for the health. Self-service is not selfish. So you have to take care of yourself, take care of the family, consider the balance between profession and the family. And ACP, from the beginning, we are doing lot of webinars on health education, health awareness. So my message to all of you is read every day. You should be a listener and learner throughout your life. And whatever you learn, please spread the knowledge. And whenever there is a myth or misconception, you go to the media and explain to the public what is the important thing to take care of your health. हमारे देश के करीब 550 डॉक्टर, 50 डॉक्टर देश के बाहर के भी हैं जिन्होंने इस कांग्रेस में अपने अपने व्याख्यान दिए। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एक बहुत एलिगेंट डॉक्टर्स की बॉडी है जो कि 1,60,000 डॉक्टर्स, इनफैक्ट 1,60,000 फिजिशियंस से जोड़ती है अगर आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर का मेंबर बनने का आपको लाभ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अगर आप प्रैक्टिस करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं या कोई भी और व्याख्यान लेने या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसमें मिलता है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि अलग देशों में भी इसका लाभ आपको मिलता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर बहुत सारी नई नई चीज़ों में कार्य कर रहा है, जिसमें एक बहुत मुख्य है जिसमें हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स और पब्लिक दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ लेके आया जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मरीज़ों की संख्या भी बढ़ रही है, और जब मरीज़ों की संख्या बढ़ती है तो डॉक्टरों के ऊपर दबाव बढ़ता है। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़े, नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, नए नए डॉक्टर्स को ट्रेन कर रही है, पर इन सब के बावजूद एक डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक रहता है, और ख़ास तौर से जो अच्छा डॉक्टर होता है उससे हर कोई इलाज कराना चाहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उस प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोग
ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे डॉक्टर ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जिसमें वो बर्नआउट या डिप्रेशन जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बर्नआउट में माने कि मरीज़ देख देख करके थक जाना या मरीज़ देख देख करके बहुत विकल हो जाना, जिसकी वजह से आगे काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए और इन परिस्थितियों से बचने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन डॉक्टर्स के लिए भी वेलबींग का बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टरों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और ख़ास तौर से डॉक्टर जो कि दूसरों के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखते हैं पर अपने स्वास्थ्य के बारे में अक्सर भूल जाते हैं, उसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए और उनको इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाए कि यदि वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंसें जहाँ पर कि उनको बहुत अधिक निराशा का सामना करना पड़े, जैसे अक्सर किसी ऐसे मरीज़ की मृत्यु हो जाना जिसके बचने की संभावना हो सकती थी, या अचानक कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, अपने सारी जी जान लगा देते हैं, फिर भी मरीज़ को अच्छा नहीं कर पाते। मरीजों के रिश्तेदारों को कई बार दुखद समाचार देना भी एक बहुत जटिल कार्य होता है और इन सब में क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान होता है और उसके अंदर भी उसी तरीके की भावनाएं होती हैं जैसे औरों के अंदर होती हैं, तो कई बार इस तरह के कार्य करते करते वो बहुत दुख से भर जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियों से बाहर आने के लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम चलाते हैं जिसको कि हमने सोल करी फ्रॉम वेलबींग लाउंज ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम दिया है, जिसमें हम ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे लोगों को बुलाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाते हैं जो कि ये बताते हैं कि कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए, या ऐसे अनुभवी डॉक्टर जो कि इस तरीके की परिस्थितियों में कई बार जा चुके हैं, वो उन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकल के आए, इसके बारे में वो अपने अनुभवों का शेयर करते हैं, अनुभव साझा करते हैं। तो ये एक बहुत प्रमुख प्रोग्राम है जो कि हम चल रहा है। इसके अलावा इस साल हम लोगों ने ऐसा भी सोचा है कि एडल्ट इम्यूनाइजेशन यानी बड़े लोगों के अंदर टीके लगाने के बारे में भी जागरूकता पूरे देश में फैलाई जाए, जिससे बड़े लोगों में होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सके और उनकी संख्या में कुछ कमी लाई जा सके। क्योंकि अगर जैसे हम लोग बच्चों में इम्यूनाइजेशन करते हैं, बच्चों में इम्यूनाइजेशन करने के बाद बच्चों की मृत्यु दर में काफ़ी हद तक गिरावट आई, और यदि हम बड़े लोगों में भी इम्यूनाइजेशन कर सकेंगे तो शायद हम लोगों के जीवन को ना सिर्फ लंबा कर सकते हैं बल्कि सुखद भी कर सकते हैं। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की यही एक इच्छा है कि वो ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के सभी लोगों का स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में कामयाब हो सके, और सब पूरे विश्व के डॉक्टर्स जो कि एक परिवार का हिस्सा हैं, उन सबको हम अपने अपने मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित कर सकें, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकें, अपडेशन कर सकें, और नए डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनको दूसरे देशों में जा कर के अनुभव करने के लिए भी कोलैबोरेशन या इंटर कंट्री कोलैबोरेशन का हम लोग शुरुआत कर सकते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के माध्यम से। जब अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के आप सदस्य हो जाते हैं तो दूसरे देशों में आपकी ख़ासतौर से अमेरिका में आपके जाने का रास्ता खुल जाता है, और वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम के साथ में आप एसोसिएट हो सकते हैं, उसके साथ आप बहुत सारे वो कार्य कर सकते हैं जो कि सामान्य रूप से आपको मुश्किल लगते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और कार्यक्रम जो कि अभी शुरू होने वाला है, जो हम एडवांस कैरियर फिजिशियंस के लिए कर रहे हैं, ख़ासतौर से उन डॉक्टरों के लिए जो कि 70, 75, 80 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और अपने आप को परिवार के अलग हैं, कई लोगों के स्पाउसेस की डेथ हो जाती है, अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका अकेलापन कई बार उन्हें बहुत परेशानी में डाल देता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उनकी हो जाती हैं। मरीजों को कई बार वो देख पाते हैं, कई बार मरीजों को नहीं देख पाते, तो ऐसे लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़े रखा जाए, उनको कैसे अपडेट करते रहा जाए, इस सब के बारे में हमारा एडवांस कैरियर फिजिशियन का कार्यक्रम भी जल्दी शुरू होने वाला है, जो कि इस साल हम इसे शुरू कर देंगे। हमने अपना एक काउंसिल मेंबर्स की नियुक्ति सिर्फ इस कार्य के लिए ही की है कि वो एडवांस कैरियर फिजिशियन से संबंधित सभी
कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की आने वाली योजनाओं के बारे में बताया। अगर हम इसके ऊपर अपनी सारी योजनाएं आपको बताएं तो शायद 1 घंटे तक मैं बोलता रहूँगा और आप लोगों को सुनते रहना पड़ेगा। I am Dr. Akash Kumar Singh from Baroda. I have come here to deliver a talk on clinical assessment of cardiac murmurs. Now this conference, ACP Near Conference, is the national conference which caters to a host of topics ranging from internal medicine to cardiology to diabetology to metabolic diseases, and in this I was assigned the topic of clinical assessment of cardiac murmurs. Now, as we know that with the advent of technology, our basic clinical skills are getting extinct basically, and the newer graduates are not well aware of how to do the final clinical examination of the patient. So the topic which was assigned to me was for basic clinical sciences, in which I could speak on the various technical skills which are required to auscultate the patient, to detect the different type of heart signs, to detect the different types of murmurs, to quantify the murmurs, to gauge the murmurs, and to make a provisional diagnosis based on the quality and murmur and the duration and the various other characteristics of murmur. And this has to be correlated with the newer investigations, and developing these clinical skills is of utmost importance, because a doctor who has clinical skills is always much better than those who does not have clinical skills and relies only on AI and investigations for diagnosis, management of the patient. So my emphasis is that though we have newer investigations, newer methods of diagnosis, AI tools to our disposal, it should not impede your clinical judgment. Your clinical judgment should always supplement, complement, and be synergistic with the newer investigations, which will go a long way to improve the management of the patient and to improve his prognosis and to improve the outlook of the patient. Also, developing clinical skills will also increase your empathy for the patients, and a patient-doctor interaction is utmost for the well-being of the patient. मैं डॉक्टर शशांक जोशी हूँ। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ लीलावती हॉस्पिटल में मुंबई से। मैं पहले तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंडिया चैप्टर की एक मीटिंग बहुत यशस्वी रीते भुवनेश्वर में की है। इसमें अलग अलग संशोधन, अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है। मेरा जो विषय था प्रेडोमिनेंटली वो मधुमेह, मोटापन और मधुमेह मोटापन में हुआ जो इन्फ्लेमेशन है और उसका लाइफस्टाइल का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में था। हमको सबको पता है कि दुनिया में नंबर 1 क्रमांक चीन और इंडिया का है पॉपुलेशन में। 8 बिलियन लोग रहते हैं पूरे दुनिया में, उसमें से 1.4 बिलियन ईच रहते हैं चाइना और इंडिया में। और सबसे ज़्यादा मधुमेह, चर्बी, मोटापन का जो प्रमाण है ये भारतवंश में है 101 मिलियन का। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हमारे जो दिनचर्या है और हमारी जो जीवन शैली है इसमें बहुत डिसरप्शन हुए हैं, और हमको हमारे खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए, कम खाना चाहिए, सही वक्त पे खाना चाहिए, और जो सही खाना है वो खाना चाहिए और स्लोली खाना चाहिए। उसके साथ ही व्यायाम करना उतना ही महत्व है। लोग बहुत सीडेंटरी हो गए और हम काफ़ी एडिक्ट हो गए हमारे डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर। तो फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए, योग और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मसल बिल्डिंग करना चाहिए, और इसके साथ 1-7 घंटा नींद आनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हंसते खेलते रहना भी बहुत ज़रूरी है। 2 घंटा 1 घंटा डिजिटल डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है, और हेल्दी और हैप्पी एक जीवन शैली मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने यही हमारे जो व्याख्यान माला में बताया कि मधुमेह की हमको राजधानी नहीं बनना है, मधुमेह केयर और प्रिवेंशन की हमको भारतवंश को राजधानी बनाना है, और इसमें हम सब लोग साथ में मिलके काम कर सकते हैं। और इसमें हमको कम खाना चाहिए, खलू खाना चाहिए, सही वक्त पे खाना चाहिए और सही खाना चाहिए, और उसके साथ थोड़ा व्यायाम, योग और चिंतन मनन, और उसके साथ ही हंसत खेल करके 1-7 घंटा नींद भी आनी चाहिए। तो हम मधुमेह पे मात कर सकते हैं, पेट की चर्बी या मोटापन पे मात कर सकते हैं, और इससे हम जो है कि हमारी जो आयु है बढ़ा सकते हैं। I am Dr. Anil Kumar Virmani, Chairman Scientific Committee
ACP, American College of Physicians, India chapter. We are having our 8th annual conference in Bhubaneswar today. It started yesterday. We have and will end by tomorrow afternoon. We have a number of more than 100 speakers, more than 200 chairpersons, and almost every subject in the field of internal medicine has been covered, whether it be neurology, nephrology, heart, respiratory. We have tried to cover everything and give a total capsule so that the doctors of Odisha and all the delegates that are attending can benefit, can take this new information to their clinics and give due benefit to all the patients. Good evening, friends. I am Dr. Vijay Patni from Calcutta, and I am fortunate to be here in the ACP India chapter at Bhubaneswar, and I am a fellow of American College of Physicians, and I was delighted to be invited as well as to give a talk on a very important topic, that was post-COVID interstitial lung disease, which was a new entity as far as the talk goes. So we have more or less overcome the epidemic of COVID, but the sequelae remains, and the sequelae in the form of pulmonary fibrosis is still affecting a small percentage of the individual who had been severely affected in the time of COVID. So these individuals probably are most likely to be on a long-term oxygen therapy, and it's very difficult to give the prognosis when and where they will be able to lead a normal life. But one thing is for sure, that this post-COVID interstitial fibrosis is actually in most cases have been reversible, and this gives us one hope that probably most of the patients will come out of the problems and will be able to lead a normal life. Though we have lots of treatment, particularly the antifibrotics and the immunomodulators, which have been tried, but the mainstay happens to be a long oxygen therapy, probably 1 or 2 liters a day. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष डेंगरा, डायबिटीज़ थायराइड मोटापा रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर माही डायबिटीज़ थायराइड केयर रिसर्च सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज यह ACP कॉन्फ्रेंस जो भुवनेश्वर में आयोजन की गई है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि जन सामान्य को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। मेरा जो टॉपिक था वो था इन्फेक्शंस इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति की शुगर यदि बहुत लंबे समय तक 200 के ऊपर रहती है तो उसे कोई भी इन्फेक्शन सर से लेकर पैर तक पकड़ सकता है। इसीलिए हमारे डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्तियों को एक संदेश है कि वह अपनी खाली पेट की शुगर 100 के आसपास और भरे पेट की शुगर कम से कम 180 के नीचे रखना ही है। इन्फेक्शन से क्या बात होती है, पेशेंट को सर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों में कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, दांतों में अक्सर पेरियोडोंटाइटिस, जो पेशेंट बोलते हैं हमारे मुंह से बदबू आ रही है, उसके द्वारा भी कई बार पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई है। इसके बाद गले में खराश, इन्फेक्शन, टीबी और फेफड़ों में निमोनिया या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आंतों में इन्फेक्शन, दस्त लगना, कब्ज रहना, और किडनी, यदि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन ठीक नहीं किया जाए लंबे समय तक तो फिर पेशेंट को किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार लिंग में जो इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वह पकड़ते हैं कि आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी हुई है, तो कई बार लिंग में इन्फेक्शन होने से, फंगल इन्फेक्शन से पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। इसके बाद सबसे जो हमें चिंताजनक घाव होते हैं पैरों में, यदि कोई भी कट लग जाए या फिर कोई खीला लग जाए, उसके बाद यदि पेशेंट की शुगर बहुत बढ़ी हुई है और वह ध्यान नहीं देता है तो उसके पैर में बहुत घातक इन्फेक्शन होकर उसका पैर भी काटना पड़ सकता है। तो हमारा यह संदेश है कि जो भी डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति है वह अपनी शुगर को नियंत्रण में रखकर यह सारे इन्फेक्शन से बच सकता है। महिलाओं में बहुत कॉमन है यूरिन में इन्फेक्शन, खुजली, तो यह सारे चीज़ों से हम बचाया जा सकता है। इसका बहुत आसान फार्मूला है, EDM अपनाओ और डायबिटीज़ के सारे दुष्परिणामों से मुक्ति पाओ। E फॉर एक्सरसाइज, रोज़ आधा घंटा पैदल चले। E फॉर एक्सक्लूजन, अपने जीवन से तंबाकू, सिगरेट, शराब को दूर करें। D फॉर डाइट, संतुलित भोजन लें, कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से लें।
फल सब्जियां अच्छे से लें, और एम से आता है मेडिटेशन। रोज़ अपने प्रभु को 5 से 7 मिनट अपना ध्यान करें, और आखिरी में आती है एम से मेडिसन। तो EDM अपनाकर डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति अपना स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स रोग विशेषज्ञ जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। और आज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ओल्ड एज पुरुषों में सेक्स हार्मोन की कमी। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इससे बात करने में डरते हैं डॉक्टर से। अमूमन ये देखा गया है कि जो पुरुष 45, 50, 55 साल के ऊपर हो गए उनमें सेक्स हार्मोन की कमी पाई जाती है, और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? आपके अंदर कमज़ोरी होती है, आपके मांसपेशियों में थकावट ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन आता है, चेहरे पे गर्माहट रहती है, वज़न बढ़ जाता है, पेट का जो चर्बी है वो भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात आपके सेक्स ड्राइव में कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल छुपाएं नहीं, अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये बहुत ही आम बात है कि एक ओल्ड एज पुरुष में सेक्स हार्मोन की कमी होना। इसका ठीक से इलाज करिए, अपनी बीमारी को पहचानिए, और बीमारी पहचान के आप इन चीज़ों का प्रयास करिए कि ये चीज़ें आप कैसे चली जाए। दवाई प्रॉपर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और एक अच्छी डाइट आप अपने लाइफस्टाइल में अपनाइए विद एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मैं डॉक्टर दिव्या सक्सेना हूँ, और यहाँ भुवनेश्वर में आज अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए यहाँ पर हूँ। और ये एक कल्चर के शहर में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो बहुत ही अच्छी है, और काफ़ी इंडिया के सभी पार्ट से लोग यहाँ पर हैं, और डेफिनेटली सबसे मिल के बहुत अच्छा लगता है, और इतने सारी साइंटिफिक प्रोग्राम, साइंटिफिक बातें, नॉलेज शेयरिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक समारोह है, एक सबका मिलना बहुत अच्छा है। मैं ACP में विमेन विंग की गवर्निंग काउंसिल में एक मेंबर हूँ, विमेन विंग की चेयरपर्सन हूँ, और आज हमने जो टॉपिक हमें दिया गया था बात करने के लिए, मेरा टॉपिक था कि कुछ ब्लड सेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कैसे समझा जाए, कैसे पहचाना जाए, और कैसे उनका इलाज किया जाए समय पर। तो जो आप जनता के में इस समय, इस मौसम में ख़ास तौर से देखने में आती हैं, ब्लड से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो है प्लेटलेट का कम होना। इस मौसम में ख़ास तौर से डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा है, प्लेटलेट कम होती है, और आप लोग घबराते हैं, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। प्लेटलेट की संख्या देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको मॉनिटर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई सिम्टम्स ऐसे हैं तो उनको संभालना ज़रूरी है, फीवर को संभालना ज़रूरी है। प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं होती है, कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ये अपने आप नॉर्मल आ जाती हैं। तो कुछ इंतज़ार और डॉक्टर पे भरोसा, सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक वाकई बात करने वाला था, और इस बारे में आज मैंने यहाँ पर लोगों को नॉलेज शेयर करी है। मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव हूँ, और मैं प्रयागराज से आई हूँ। मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में प्रोफेसर मेडिसिन के पद पे हूँ, और आज यहाँ पे मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन भुवनेश्वर में जो आयोजन हुआ था उसमें मैंने हिस्सा लिया है। और भुवनेश्वर जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, या हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये एक स्पिरिचुअल सिटी है, और इस बार की जो हमारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन इंडिया चैप्टर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वह आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिसिन पे आधारित थी। कई नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकरों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, और यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और मैं आप सभी दर्शकों को जो भुवनेश्वर के हैं, उड़ीसा के हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना हमें प्यार मिला, अपनापन मिला, और हमने इस शहर को बहुत अच्छे से देखा। और अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक था, हमने जो बोला वो जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं लिवर को असेस करने के लिए। कई बीमारियां हैं, जैसे कि पेट में दिक्कत होना, गैस बनना, उल्टी जैसा मन हो रहा, उस समय हमारे डॉक्टर हमसे कहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो कई बार हमारे रूटीन पेट की समस्याओं में या लिवर की समस्याओं में एक अल्ट्रासाउंड की जांच ज़रूरी है, और उसमें कई ऐसी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो कि बिना उसके हमें मालूम नहीं पड़ती। कई बार कोई भी सिम्टम्स होते नहीं। इसी तरह
लिवर की डिजीज़ेज़ हैं जो बिनाइन होती हैं, मतलब जो ख़तरनाक नहीं होती हैं, और कुछ होती हैं मैलिग्नेंसी या जो ख़तरनाक या कैंसर होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक पहला और बहुत सस्ता इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम लिवर के बारे में जान सकते हैं। और अभी अगर हमें उसमें कोई मांस या गांठ मिलती है तो हम उसकी कॉन्ट्रास्ट इन्हांस से भी जांच करके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेजॉरिटी में रूटीन में जांचें होती हैं जो कैंसर नहीं होती। तो कोई भी गांठ अगर अल्ट्रासाउंड में आ रही है तो वो कैंसर नहीं है, वो कई बीमारियां बिनाइन भी हो सकती हैं। एक पूरा होलिस्टिक चेकअप होता है, आपके लक्षण क्या हैं, आपके एग्जामिनेशन पे क्या है, और अल्ट्रासाउंड में अगर वह गांठ नहीं समझ में आती है तो सीटी और एमआरआई करके या एफएनएससी करके भी हम उसकी मैलिग्नेंसी के बारे में जान सकते हैं। तो हमारा आप सब से यही कहना है कि लिवर की कई जांचें, अल्ट्रासाउंड में कई गांठें आ सकती हैं, तो हमें घबराना नहीं है। आपके लक्षण के हिसाब से उसको देखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे हायर इन्वेस्टिगेशन यानी सीटी या एमआरआई ज़रूरत पड़ने पे करा सकते हैं और उसे कंफर्म कर सकते हैं। Me, Dr. Manavendra Nayak, HOD, Department of Medicine, Downtown Hospital, Guwahati, and I am a postgraduate teacher of NBEMS. I attended ACP Bhubaneswar today, but at the same time I attend ACP all meeting except meeting which was not held on during COVID. Today I delivered a talk on abnormal transaminase in normal patient, what we have to do right now. It is really a great experience to talk with all the luminaries and the great physicians and stalwart and exchange the words about the subject, at the same time interact with the PG students and colleagues, which give immense pleasure. ACP India done a very great job for quite long period of time, including training to the PGD students, giving scholarship to attend the ACP annual conference in US. So it is a great picture. Hope in near future they will do better and better. I am Professor Partha Karmakar. I am from Kolkata. I have come here for joining the 8th conference of ACP, that is American College of Physicians, being held in Bhubaneswar. So I am fellow of also American College of Physicians. So I am really very happy to come over here and hearing so many academic extravaganza and listening to so many good lectures also. So here today I was also interested upon a very important topic that I delivered, that is your pulmonary function test. And we internists actually don't give that much of importance to pulmonary function test, but if you have, so far your clinical diagnosis is concerned, you are having little bit doubt whether you are dealing with a case of borderline obstructive or restrictive sort of, or mixed between obstructive and restrictive, it is always very helpful to go for pulmonary function test and DLCO, and it will definitely give you a very important parameters, depending upon only 3 very important parameters, that is FVC, force vital capacity, FEV1, that is force expiratory volume in 1 second, and the ratio of FEV1 FVC. Only banking upon these 3 parameters, forget about other parameters, you can very well, if you can clinically match, you will be almost doubt free whether you are dealing with a case of obstructive or restrictive sort of pulmonary disease. So whenever you are in dilemma, whether you are dealing with obstructive or restrictive, please go for PFT, and interpretation of this PFT is also very important, and if you can interpret it in a proper way, it will definitely help you a lot so far your treatment is concerned in this sort of lung disorders. Hello everyone, I am Dr. Brij Makkar. It's indeed a pleasure to be here at the ACP India annual conference that is happening at Bhubaneswar, and I had the privilege of presenting one of the ACP initiated study data which I presented just now. So ACP has done a very good study looking at the real world impact of vitamin D deficiency on insulin resistance,
and I happen to be one of the principal investigators, and I was also given the opportunity to present the interim analysis data from this study. And this study we have been able to see that vitamin D deficiency is very prevalent in people with type 2 diabetes, and people with type 2 diabetes who have low vitamin D levels, more than 50% have either significantly low or very severe vitamin D deficiency. And important thing is 3-month supplementation with the 60,000 units capsule of vitamin D has shown a significant improvement in vitamin D levels, and almost all people who were given 3 months therapy with vitamin D were able to restore normal vitamin D levels. In addition, people who had increased HOMA-IR level, which is a marker of insulin resistance, there was significant decrease in the HOMA-IR in people who were treated with vitamin D. So this is very interesting study, and I'm sure these results will have clinical implication in terms of managing people with type 2 diabetes better in future. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव हूँ, सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से हूँ। यहाँ पे ACP इंडिया चैप्टर का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें मैं भाग लेने आई हूँ। बेसिकली जो मेरा टॉक था वो हेपेटाइटिस बी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड था। हेपेटाइटिस बी वायरस एक इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन होता है जो लिवर पे असर करता है। जब ये गर्भावस्था में असर करता है, जब ये कोई भी महिला हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होती है और वो गर्भावस्था होती है, उसमें वो गर्भ धारण करती है, तब उसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि यदि होने वाले बच्चे में ये हेपेटाइटिस बी गया, ये वायरल इन्फेक्शन जाता है, तो आगे उसको लंबी बीमारी जिसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं वो होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम बचा सकते हैं अपनी गर्भावस्था महिलाओं को। कैसे? हम उनकी हेपेटाइटिस बी की जांच कराएं। यदि वो पॉजिटिव आती है तो उसका प्रॉपर इलाज होता है, और उसके साथ साथ जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान बहुत ही सिंपल चीज़ है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगवाया जाए। यानी कि हेपेटाइटिस बी का टीका 24 घंटे के अंदर ही बच्चे के पैदा होते हुए यदि लग जाता है तो उसे काफ़ी आराम मिलता है, उसको होने की संभावना कम हो जाती है, और फिर उसके आगे 1 महीने बाद और 6 महीने बाद उसका कंप्लीट कोर्स होता है, उसे कंप्लीट करना चाहिए। तो यदि हम ये टीकाकरण अच्छा करते हैं तो हम हेपेटाइटिस बी जो बच्चे में हो रहा है उसको बहुत अधिक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यदि हम महिला का भी इलाज टाइमली कर सकें तो इसमें बच्चे को हेपेटाइटिस बी से ग्रसित न हो पाए उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसे हमें ध्यान में रखना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है और मैं नई दिल्ली से हूँ, और मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भुवनेश्वर आया हूँ, और मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का एडवाइजरी काउंसिल मेंबर भी हूँ। आज मैंने यहाँ पे एक टॉपिक पे व्याख्यान दिया, और जो मेरे टॉपिक का शीर्षक है या टाइटल है वो ये था कि हम वार्ड में सिक होने वाले पेशेंट को कैसे पहचानें और कैसे वार्ड के पेशेंट्स की केयर की जाए ताकि उनमें कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कर सके। तो इस टॉक में हमने ये देखा कि वार्ड में जब पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो वार्ड वाले पेशेंट्स यूजुअली उतने सिक नहीं होते हैं जितने कि आईसीयू में एडमिट होने वाले पेशेंट। तो अक्सर इन पेशेंट्स को जब हम केयर करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा जाता है, बट कई बार सडनली ये पेशेंट्स, इनमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अचानक से ज़्यादा गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं, ज़्यादा अधिक बीमार हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को हमें वार्ड में शिफ्ट करना, वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। तो जो इस टॉक में हमने समझा वो ये समझा कि किस तरह से हम किन पैरामीटर्स का ख्याल रखते हुए इस तरह के साइंस को जल्दी पकड़ सकते हैं और सिक होने वाले पेशेंट्स को हम आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं, या हम टाइमली इंटरवेंशन करके ऐसे पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम वार्ड में किसी पेशेंट का रेगुलर पल्स रेट देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, इसके अलावा हम उसका सेंसोरियम मॉनिटर करते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल मॉनिटर करते हैं, या कुछ और भी जो वाइटल पैरामीटर्स जिनको हम बोलते हैं, अगर जब हम मॉनिटर करते हैं तो इन पैरामीटर्स की सहायता से
हम कई बार ये पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट स्टेबल है या ये पेशेंट अनस्टेबल होने जा रहा है या अनस्टेबल हो चुका है। ऐसे में अगर हम उस वक्त जांचों के ऊपर ध्यान दें, ऐसे में अगर हम उस वक्त ये देखें कि पेशेंट में किस चीज़ के कारण से ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है, पल्स में वेरिएशन आ रहा है या उसका रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो रहा है, तो हम उस एनालिसिस के हिसाब से उस वक्त जो डायग्नोसिस बनता है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर कई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हम पेशेंट्स की जान बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी डॉक्टर्स एज ए टीम काम करें, जिसमें कि जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, आपके नर्सिंग अडरली सभी एज ए टीम की तरह काम करते हैं और बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल कम्युनिकेशन रहे और पेशेंट से हर चीज़ के बारे में खुल के बात किया जाए। तो अगर हम सतर्क रहें, सजग रहें और हम पेशेंट्स के बारे में हर वाइटल्स के बारे में खबर रखें और उसको पल पल के हिसाब से असेस करें, तो हम वार्ड में होने वाली गंभीर स्थिति से बच सकते हैं। आई एम डॉक्टर मुकुलेश गुप्ता and I come from Lucknow. I am a senior physician and diabetologist और मैं यहाँ पर आया हूँ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि भुवनेश्वर के अंदर हो रही है उसको अटेंड करने के लिए। मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी हूँ और मैंने जो टॉपिक मुझे दिया गया था बोलने के लिए वो था नाखून, जो कि हमारे बड़ी कॉमन अकरेंसेस होती हैं। जबकि हम किसी पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं तो नाखून ज़रूर देखते हैं और उन नाखूनों की क्या चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड में क्या क्या बीमारियां पाई जा सकती हैं जिनसे उनको लिंक किया जा सकता है। ये मेरा सब्जेक्ट था जो कि मैंने यहाँ पर एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर डेलिब्रेट किया था। मैं यहाँ पर ACP जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है उसके अंदर मेरा एज ए फैकल्टी पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसके अंदर मुझे बोला गया था कि मुझे नाखूनों के बारे में बताना है कि किस प्रकार नाखून देख करके उसके पीछे होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ हद तक जाना जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाखून हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है और अगर वो अनपॉलिश्ड हैं और अगर हम उनको देखते हैं तो हम क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि पीछे क्या बीमारियां हो सकती हैं। नाखून आयुर्वेद के अंदर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व रखते हैं और आयुर्वेद के अंदर भी ये देखा गया है कि नाखून अगर आपके किसी रूप में परिवर्तित हुए हैं तो उनके पीछे आपकी पाचन क्रिया की समस्या या आपका मेटाबॉलिज्म का धीरे होना समस्या या फिर कई और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि थायराइड, जैसे कि कैंसर्स, जैसे कि कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़ेज़, इन सब चीज़ों का अनुमान हम नाखून को देख करके लगा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन का पार्ट होता है और एक फिजिशियन के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी क्लू देता है और जब हम उन नाखूनों को देखते हैं तो हम उसके प्रति उसके पीछे होने वाली बीमारियों के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा लेते हैं और फिर हमारे लिए ये आसान होता है कि हम उसको उसी तरह के डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट के लिए हम आगे उसको सब्जेक्ट करते हैं। तो नाखून अपने आप में बीमारियों को जानने के लिए जिस प्रकार हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उस फिजिकल एग्जामिनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और जब ये अनपॉलिश्ड होते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं। और ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था इसमें यही महत्वपूर्ण बातों को मैंने सबके सामने रखा कि जब भी हम नाखूनों का एग्जामिनेशन करें तो इन बातों का ध्यान रख करके करें। Monathala Devjit Tripathi. Okay, so it was really a great pleasure to come to Bhubaneswar and attend this annual ACP meeting in Bhubaneswar. And actually, I graduated from SCB Medical College. ମୁଁ 89 रे to SCB रे MBBS करथली, तापरे मु MD और DM करथली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तापरे आई बीन US रे लास्ट 25 years मु सिटी अछि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस रे आई एम ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंडोक्रिनोलॉजी एंड दिस मीटिंग टुडे एक्चुअली आज मोर टॉक था गोटे डायबिटीज आउ ओबेसिटी पाई गोटे नुआ क्लास ऑफ मेडिकेशन सेटा कहउछंती ताको इनक्रेटिन एगोनिस्ट सेटा गोटे नुआ टाइप मेडिसिन सेटा मु जो दुईटा मेडिसिन पर कहली से मेडिसिन दुईटा एबे अप्रूव है नहीं। फर्स्ट आपण फॉर डायबिटीज ओबेसिटी पाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिवे, डाइट एक्सरसाइज सेटा काम न कला पर तापर नुआ दुईटा मेडिकेशन पे आज कहली सेटा होची
ଏବେ ଯେତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପୋଟେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଏ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ରେ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ ଯେବେ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବିସିଟି ଅଫକୋର୍ସ ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ବି that may be very expensive and beyond the reach of many people here, but those who can afford it, this will be a very good treatment option for diabetes. Hello everyone, I am Dr. Rucha Mehta, consultant endocrinologist and diabetologist, and it gives me great pleasure to come to you live from the ACP India conference happening in Bhubaneswar. Today I spoke on a very important topic, tackling the stigma of obesity. So this is something that is very important as I see a lot of patients in my practice with obesity. And I realize that we need to change the way we think about this. What stigma means is something we brand or stereotype a patient as. And what I spoke today is how it can really affect not just a patient's personal health outcomes, but by causing depression, affecting mental health, and causing increased burden on the healthcare system, also become a huge matter of public health concern. Therefore, I urge you to rethink how you approach your patients with obesity, have a more holistic approach to these patients. Make sure you're not simply taking care of the medical and the biological consequences, but making sure you do a psychological analysis, empowering your patient and doing a cognitive analysis. A huge movement is needed and legislation is needed at the national level and creating awareness about this and having body image positivity movement being a part of this. I am Professor Narsingh Verma. I am Secretary of ACP India chapter, and ACP is a worldwide organization which has lakhs of doctors, physicians, and basically association is to upgrade the knowledge of the doctors all around the world, keep them updated about the subject, and also the new information shared to everyone, and the skill development is another aspect, and then socialization, and also starting from residents, junior residents, students to physicians to senior physicians, everyone is being catered by the ACP, American College of Physicians. So our motto is to build the India chapter and keep our knowledge global so that we can be benefited what developments are occurring all around the world in the field of medicine. So with this motto, American College of Physicians India chapter is working. And today I was talking about in this meeting, my lecture was about the measurement of blood pressure. The measurement of blood pressure is very important. Basically, every physician knows about what are the drugs for hypertension and how the drugs will be used, but they lack this knowledge of measurement of blood pressure, because measurement of blood pressure is taught only during the medical training first year, and then nobody has any update about the measurement of blood pressure. So my talk was basically on home monitoring, how the blood pressure can be measured at home and how this home monitoring can benefit our patients about hypertension. They can be diagnosed easily and the correct diagnosis can be made. Not only that, they can also have the good control of blood pressure. All over the world, this is now known that home monitoring of blood pressure is a very good option for hypertension patients. Good morning. I am Dr. Shankho Sen from Shiliguri. I am the Secretary of the Association of Physicians of North Bengal. I have been invited here by the American College of Physicians in India chapter at Bhubaneswar to deliver a talk on skin, the warning signals. That means if I see the skin of a person, how do I diagnose that what can be the warning symptom? It may not be a plain skin disease. It can be a disease inside of the body, something serious which manifests as skin diseases. My point was not to overlook the skin symptoms
it can lead to other diseases. Like if we can look of certain changes in the color of the skin, certain changes in the color of the nails, in the hairs, also the changes in the pattern, some rashes. We can suppose a fever patient comes with rash, we'll think of dengue in current situation. If in the skin rash is quite important, there are certain skin rash patients of measles, mumps, all these viral infections can cause skin rash. Similarly, of joint pain or arthritis like SLE, rheumatoid arthritis, there are specific skin changes in the face, in the body and in the limbs, means up hands and feet also. Similarly, the most commonly we come across patients with thyroid diseases where skin changes in the legs are quite common, like in hyperthyroidism and hypothyroidism like pretibial myxedema and all. Similarly, for diabetes, there are various conditions which can lead to skin manifestations, like the skins can be dry, that is called xerosis. There can be skin changes of bulla, means certain watery pus containing features, and also if there are cracks due to dry skin, there can be infection can go into it and can lead to certain infections which can even lead to surgical changes, of necrotizing fasciitis or certain things. Similarly, skin changes of sepsis like septicemia, the blood infection can also be manifested. Certain drug reactions can be seen in skin. If there are certain drugs which can lead to certain conditions called Steven-Johnson syndrome, which can be fatal also. So skin is very important, so we have to look into the skin manifestations, we should not ignore, and also the patients, they should take care of the skin manifestations, because if there are certain skin rashes, skin changes, they should notify it to us, because that can lead to us to suspect some underlying disease also. So this is for our awareness for the doctors and also for the patients. Thank you. I'm Dr. Suranga Mayalgama. I'm from Sri Lanka. I'm a specialist in internal medicine, working at Colombo North Teaching Hospital, Sri Lanka. And I was invited to have a talk, to give a talk in ACP India conference by Dr. Anuj Malhotra. And so this is, so I have attended to ACP India conference in 2018 as a speaker, then once as a virtual speaker during the COVID era, and this time I have come from Sri Lanka. And it is a pleasure me to attend to this conference, and I think this is a prestigious conference where all the speakers from various countries will get together and do important topics, discuss important topics at the conference. And today I did my speech on discordant thyroid functions, where I discussed what is the usual pattern of thyroid hormone dysfunction, and then I discussed how it would be different in some other patients where we call it anomalous or discordant thyroid functions. And I discussed few case scenarios where what would happen in each case and how the thyroid functions would differ from the normal routine rules. Yes, and I thank everyone for inviting me to give a talk here, and I would like to attend to ACP India conference in the future also. Thank you very much. I am National Professor A.K. Azad Khan from Bangladesh. I am the President of the Diabetic Association of Bangladesh. It happens that I am also the Chair of the Southeast Asia IDF Committee. This conference has given me good opportunity. The opportunity to see how healthcare is evolving in this part of the world. I think this sort of conference are very useful, because most of the conferences that we attend are on specialized subject, and specialized subjects are of course needed, but if you think of the healthcare as a whole for the population, this sort of holistic approach is very important. I think the conference has been excellent. I myself have been benefited. Also, it gives you the opportunity of the very warm hospitality that I have received here, for which I am very grateful. I have one suggestion. I would have felt happier if there had been more topics on prevention of diseases.
because nowadays with the rising prevalence or incidence of the non-communicable diseases, prevention has become even more important than before. So, in future, prevention also should be given more importance. Thank you. I am Dr. Puneet Saxena. I am a senior professor of medicine at SMS Medical College and Hospital, Jaipur. And I am here for attending this ACP, American College of Physicians annual conference of Indian chapter. And I am very happy to attend the academic feast over here, and the topics which have been selected and the scientific program has been managed or crafted very nicely. And I was asked to deliver a talk on the management of patients in the post-acute care settings, which I want to say in few lines is that it's a very, very important aspect of providing comprehensive health care to the patients, and especially country like us, India, where there is a large burden of chronic diseases like diabetes, hypertension, the cardiovascular diseases, the cerebrovascular diseases, and the increasing incidence of road traffic accidents and cancer patients. So we need to develop the infrastructure and the concept of the managing these patients in the post-acute care, which is very, very much required for the Indian patients. And we had a discussion on that, and I was happy that there was a very healthy discussion after the talk, and understanding of the importance of this concept was very well taken by the audience. Thank you. Yeah, myself, Dr. P.K. Maheshwari, Professor and Head, Neurology Department, SN Medical College, Agra. This conference is running very well. All the exhaustive topics is being discussed from the various aspects of particularly with the social issues and for the public purpose. That's a very nice thing, and that Dr. Jayant Panda, Dr. Virmani and Dr. Anuj Maheshwari was very nicely organized. And as I have already spoken in my talk, that in epilepsy, that one should also ask about any psychiatric comorbidity with each and every visit of the patient, because epileptic patients who are uncontrolled on the seizures or the repeated seizure disorder, they have got a 30 to 50% incidence of depressive outlook, and 10 to 20% they are the psychotic. They may have got a very much suicidal tendency, they are very much anxious, they have got a aggressive behavior, and so each and every time one has to ask about any mood disorders are there, any lack of sleep is there, any other things in the behavior like lot of the irritation, change in the service also to be asked, and also these things to be also observed by the family members whenever in the next visit to the doctor. He should also say about all these mood type of the things, because the psychiatric comorbidity is very much common nowadays with the epileptic patients. I am Dr. Ananda Bagchi, a senior consultant physician from Kolkata, having 36 years of practice. I have come to Bhubaneswar to attend the annual conference of ACP, American College of Physicians, where I am a fellow of this American college. So I am very glad in attending the conference, and I had a talk just now I have finished on sudden cardiac death and its preventive strategies. Can we prevent sudden cardiac death? And sudden cardiac death, as you all know, is a dreaded problem, and of late many young maybe doctors and non-doctors are dying due to sudden cardiac death, and after COVID also, due to long COVID syndrome, there are a number of cardiac deaths which are attributed to sudden cardiac death. There are so many causes. In younger people, the main causes are hypertrophic cardiomyopathy as well as myocarditis and electrical abnormalities of the heart. This is the main cause for death in younger individuals, and for older individuals above 40 or 45 like that, the heart attack or myocardial infarction we call it, and also heart failure with low ejection fraction. These are the main cause. And for older individuals, the structural heart disease like
sarcoid disease, amyloid disease, or cardiomyopathies. These are the main cause for death in the older individuals. Now coming to how can we prevent? Because prevention, we will have to think for prevention, but the problem is as 60% of this sudden cardiac death occurs outside the hospital. So the approach is sometimes difficult, but if we get these patients to the hospital, we can implant, we can treat it with drugs like IV amiodarone, beta blockers, as well as implanting ICD or implantable cardiovascular defibrillator. This is a very unique instrument which can prevent the sudden cardiac death. It has got a role in primary prevention as well as secondary prevention, and compared with drugs like I have already mentioned that IV amiodarone and beta blocker, there is a good chance for preventing. But in our country, as the patient reach hospital at a later time or time from home to hospital is quite high, so in this area we have to improve the rate of death in SCD patients. So thank you very much for your patient here. This is Dr. Sattur from Karnataka, physician and lifestyle expert, wonderfully organized ACP in Bhubaneswar. My talk was on high intensity exercise and the medical fitness. With 65% of the young generation in India, it is very important that they are fit to take the country forward. And for vigorous intensity exercise, it's very important that they undergo an excellent cardiac checkup, either with echo or with echo and the TMT. If the patient has heart attack, he already has some stent, has a bypass, then he has to be very careful and he may not go in for vigorous intensity, whereas moderate intensity activity is okay. And motivation is extremely important. Unless you are motivated, you will never take up the high intensity exercise. One of the best exercises is cycling around 10 miles per hour, brisk swimming, playing table tennis, not table tennis, rather playing tennis on the wider ground. And you can also even think of squash. Any activity is very important to take into vigorous physical intensity activity. I am sure this would really be very important. Diet is important. You must have lots of protein.